ओके हमरो कंडक्शन सरिला कन्वेक्शन भी सर जाइतला आज हम देखिबा रेडिएशन कौन देखिबा रेडिएशन radiation कहले कौन ना whenever the heat transfer is takes place from one surface to another surface that is called as radiation clear samajhte what is radiation na whenever heat transfer is takes place from one surface to another surface then it is called as radiation example होला the heat coming from earth to sun na sun to earth the heat coming from sun to earth जो heat टा sun ठारू earth को आस्ता that is called as radiation radiation को law हिसाब रे थाए ना स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कौन कहली स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कौन कहला ना the amount of heat radiated per unit time per unit area the amount of heat radiated per unit time per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the surface बुझेला जो surface रू heat टा radiate हेई थाए से surface रू absolute temperature सह तार temperature of fourth power सह directly proportional बुझेला कौन कहले ना the amount of heat radiated per unit time per unit area from a surface is directly proportional to the fourth power of absolute temperature absolute तामाने Q by T by A is directly proportional to fourth power of absolute temperature. So Q by T by A is equal to some constant sigma into T to the power 4. एडे सिग्मा को कौन कहा जाए स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट BOLTZ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट जार वैल्यू है 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4 ताहले सिग्मा by T A Q by T is equal to sigma A T to the power 4 if eta is the emissivity of the surface
एमिसिविटी ऑफ द सरफेस गोटे सरफेस रो एमिसिविटी जदि सिग्मा हुए ताले q by t is equal to sigma a e t to the power 4 अथवा सिग्मा a e t to the power 4 बुझियला ना बुझियला ने क्लियर समझते हबो देखि दियो नेक्स्ट देखियो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट derivation of Newton's law of cooling from Stefan's Boltzmann law. Derivation of Newton's law of cooling from Stefan's Boltzmann's law. Stefan's Boltzmann law ru Newton's law of cooling को derivation करे देखो एटा हला ओटा सराउंडिंग ए सराउंडिंग रे ओटा बॉडी थिला ए बॉडी रो टेंपरेचर थिला मन करो θ1 सराउंडिंग रो टेंपरेचर थिला θ2 क्लियर तो बॉडी रो मन करो q1 अमाउंट रो हीट रेडिएट होतला आ सराउंडिंग बॉडी को q2 अमाउंट रो हीट रेडिएट करतला बुझियला ताहले द अमाउंट ऑफ हीट radiated from the body to the surrounding Q1 कते को हो सिग्मा a e θ1 to the 4 to θ1 to the power 4 से भलिया the amount of heat radiated from the surrounding to the body surrounding body को कहते हैं heat radiate हो sigma a θ2 to the power 4 बुझे ना करे ये हीट या डी रेडिएट कर दी ये भी हीट या को रेडिएट कर दी ताहले द रेट ऑफ heat loss is equal to कहते होला minus dq by dt is equal to कहते हैं जो q1 minus q2 ताहले ये जो सिग्मा a θ1 to the power 4 ये जो सिग्मा a θ2 to the power 4 प्लस सिग्मा a θ1 to the power 4 minus θ2 to the power 4 এটা है जो सिग्मा a θ1 square plus θ2 square है जो a square plus b square এটা হলা a square minus b square फॉर्मूला अब a plus b into a minus b ताले ये जो θ1 रो स्क्वायर माइनस θ2 रो स्क्वायर बुझियला ये जो सिग्मा a θ1 रो स्क्वायर प्लस θ2 रो स्क्वायर एटा लिखिया θ1 प्लस θ2 एटा लिखिया θ1 माइनस θ2 बुझियला तो मने करो θ1 इज न्यूमेरिकल इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ किंतु समान को भीतर डिफरेंस किछि अछि ताहले माइनस dq by dt is equal to sigma a is equal to theta square plus theta square ये वाला थीटा प्लस थीटा ये वाला θ1 माइनस θ2 ये वाला सिग्मा a into
2 theta square into 2 theta into theta 1 minus theta 2 एला 4 theta cube minus dq by dt this is equal to 4 sigma ae theta रो q हे जीवो theta 1 minus theta 2 but this part is a constant एटा कोनडा constant तो minus dq by dt is equal to some constant k theta 1 minus theta 2 ताले minus dq by dt is directly proportional to theta 1 minus theta 2 this is called as Newton's law of cooling या कौन कहा जाए this is called as Newton's law of cooling नेक्स्ट देखिए ब्लैक बॉडी कहले कौन What is a black body? Now black body is a body which has infinity capacity of absorbing and rejecting. जे सब हिट को absorb कर लिए और सब तक हिट को reject भी कर दिए बुझेला ना बुझेला नहीं तो sun is a perfect black body sun is a perfect black body बुझेला अरे बुझेला what is a black body that is a body which has infinity capacity of observing and rejecting it यारो infinity capacity ଅଛି observe କରିବା और reject କରିବା perfect black body हो जी के ना sun sun हो जी ओटे perfect black body तेना कोई कुहा जे सूर्य सकल शक्तिर आधार सबु एनर्जी गुडा को कोड आरंभ होई जाय सूर्य को ठार आरंभ होई जाय आप पूर्ण से बुली वाली की जाई पहुंचे का पाखरे सूर्य को ठार पहुंचे तेना कोई सन इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी बुझेला ताहले एठो हमर आरंभ होला वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कोन वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ Wien's displacement law कौन कहला ना the maximum wavelength of incident radiation from a surface एटा हला गोटे सरफेस टे ए सरफेस रु जहा हीट रेडिएट हुए ए हीट रो किछ गोटे wavelength थिबो तो दैट wavelength ता हला लैम्बडा मैक्स the maximum wavelength of the incident radiation is inversely proportional to the fourth power of absolute temperature of the surface बुझेला ताने ए जो जहां हीट ता रेडिएट हुए तार मैक्सिमम वेवलेंथ ता inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the body बुझेला ना बुझेला ताहले लैम्बडा मैक्स is equal to some constant v into inversely proportional to absolute temperature na fourth power no inversely proportional to absolute temperature बुझेला
हमें बी को हम कौन कहते वाइन्स कांस्टेंट बोली कहते वाइन्स कांस्टेंट जहार वैल्यू है 2900 micrometer into Kelvin 2900 micrometer into Kelvin the amount of heat emitted the wavelength of incident radiation from a surface the wavelength of incident radiation of a surface is inversely proportional to the absolute temperature. The lambda max is equal to V by T. एटा V को हम कहते वाइन्स कांस्टेंट बुझला नेक्स्ट देखो आप जब एतिका को बुझी होलो कि एतिका गोटे बुझिया तापर देखियो नेक्स्ट देखियो absorptive power transmittivity and reflectivity यह हमारा सन यह हमारा अर्थ सन पाखरु कोन हला ना हीट रेडिएट हला सन पाखरु मन कर क्यू अमाउंट रो हीट रेडिएट हला तो एथिरे कोन हला q1 अमाउंट रो हीट एब्जॉर्ब हला q2 अमाउंट रो हीट ट्रांसमिट हला और q3 अमाउंट रो हीट कोन हला ना रिफ्लेक्ट हे होला बुझेला q हला कोन amount of heat incident to the surface q1 हला कोन amount of heat absorbed by the surface q2 हला कोन amount of heat transmitted through the surface q3 हला कोन amount of heat transmitted amount of heat reflected from the surface हला ताले absorbing power कहले कोन absorbing power हला A
It is the amount of heat absorbed by the surface to that of total amount of heat incident from the on the surface. Normally, it is the ratio between amount of heat absorbed by the surface to that of total amount of heat incident. সেগুলা transmittivity কোন না amount of heat transmitted to that of total amount of heat incident. সেগুলা reflectivity power কোন amount of heat reflected by total amount of heat incident. তাহলে কোন করিবা Q plus T plus R is equal to Q1 by Q plus Q2 by Q plus Q3 by Q. ठीक है ना? তাহলে 1 by Q को যদি আমরা কমন আনিবা Q1 plus Q2 plus Q3 सब तक मिसी गला वो Q by Q হয়ে গেল 1 তাহলে A plus T plus R is equal to 1